हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कूलम के नियम की डेफिनेशन अनुसित करेंगे उसको। इससे पहले जो भी मैंने यूट्यूब चैनल में जो नए हैं, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। एक बार और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। आज का टॉपिक है कूलम के नियम को सत्यापित करें। को सत्यापित करें। कूलम के नियम किन्हीं दो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के गुणनफल को के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण 1 solve to derivation f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। f इज इक्वल टू k
ब्रैकेट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब इक्वल टू यहाँ पर कैसे आ गया। इसका मतलब इक्वल टू ला के नियंताक है, क्या नियंताक है, जहाँ के एक नियतांक है जिसे परावैद्युतांक परावैद्युत नियतांक कहते हैं। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना का मान होता है 9×10⁹ न्यूटन। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ब्रैकेट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये फुल सिद्ध हो गया। ये अपेक्षिक विद्युतशीलता जोड़ने पर